Hello students, welcome to e-learning with Ankit. I hope your examinations are going quite well and good. As your next exam is science exam, so chemistry is also one of the major important portion of that. So for that I have prepared 3 PDF over here. In that PDF we will discuss some of the important questions like MCQ questions there. Okay, assertion region question is there, as well as some of the long answer type as well as short answer type questions over there. One by one discuss, and the link of all the PDF you will get in the description. An important thing is that not each and every questions, like you can say maximum so many questions are over here, so not every question I can discuss over here. So randomly I'll take only 5 questions, then after I'll show you the question of assertion region, and 1 2 or question I'll show you of course of short answer type question and long answer type question. And you can download the complete PDF. From there you can have the solution, and in case you are having any doubt, you can any problem regarding the answer of the question, you can directly reach out to me. Okay, so without any further delay, let's start the first question. Which of the following would increase on raising the temperature? There must be any space. So in case if the temperature is increased, so what will be the correct option over here? So see, if the temperature is increased, one thing will happen, the molecules will get kinetic energy, right? If the molecules will gain kinetic energy, so diffusion will take place because the particles will mix each other, and of course evaporation will also take place. But for compression, when the kinetic will be energy will increase, this will increase of course of heating, so particles will gain kinetic energy, they will start moving. It does mean the gases will not compress, although gases will expand. तो जब भी टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो गैस हमारे एक्सपैंड करेंगे rather than compression. So whatever the options जिसमें भी compression आपको दिख रहा है, like here also compression is given, here also compression is given, all these 3 options will be incorrect, and your correct option will be over here. This is C1 option, sorry, this correct option will be C option, that is evaporation, diffusion and expansion of gases. So this is how you can eliminate option in your exam as well. So coming to the second question, I hope this one is clear to you. Second one, Seema visited a natural gas compression unit and found that the gas can be liquefied under a specific condition of pressure. Okay, while her experience with friends, she got confused. Help her to identify the correct set of condition. Means the question is all about asking you कि गैस को हम कैसे लिक्विफाई करेंगे. Let us suppose gas is given to you and you want to convert this gas into liquid. So see, what I believe that the science is a subject which is very easy when you visualize the things, when you make the imagination of the things in your mind, like what I am saying over here कि let us suppose if gas is there, so try to think about कि गैस के particles कैसे होते हैं. हमारे particles काफ़ी दूर दूर होते हैं, right? But when we are talking about the liquid, तो liquid में particles दूर तो होते हैं, but yes उतनी भी दूर नहीं होते हैं जितना like in case of gases. So it does mean देखो particles कब पास पास आ सकते हैं. 2 things we can do. First of all, we can apply the pressure, right? And in case if you are applying the pressure, the molecules will get collide to each other, so it means there will be the collision, and just because of that collision there will be increase in temperature. तो उस temperature को भी आपको कम करना पड़ेगा. तो 2 things we got to learn that कि pressure apply करो और temperature को कम कर दो. तो देखो किस option में ऐसा आपको दिया है यहाँ पे, means increasing the pressure, हाई प्रेशर वेयर से हाई प्रेशर लो प्रेशर वाले ऑप्शंस आपके गलत हो गए पहले ही. सो नाउ डिस्कसिंग विद द राइट वन कौन सा हो सकता है. देखो हाई प्रेशर इज हियर ऑल्सो, हाई प्रेशर हियर ऑल्सो इज रिटन. ओके, एंड व्हाट आई हैव सेड दैट टेम्परेचर हमें लो करना है, सो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट. दिस इज लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर विल बी द राइट ऑप्शन. Then after third one question, on converting 25 degrees Celsius, 38 degrees Celsius and 66 degrees Celsius, the correct sequence of temperature will be. So here I am not telling you the correct answer, just only telling you the formula. Which formula you are going to apply over, that is Kelvin is equals to degrees Celsius plus 273, right? This is the formula you will apply over here, and with the help of that you can do. चलो एक क्वेश्चन कर ही लेते हैं यहाँ पे. Let first is the given 25 degrees Celsius. It does mean what's value is given to us. Just a minute. So what's given here, 25 degrees Celsius. Okay, and 273 हमें इसमें ऐड कर देना है. Directly we will have the value of Kelvin because the Kelvin was given there. So it will be your 5 plus 3 8 and it will be 9 and 298. सो जो पहला ऑप्शन जिसमें 298 है वो हम लोग का सही होगा. सो हियर इज 298, हियर इज 291, रेस्ट ऑफ देम अब 38 को आप इसमें ऐड करके देखो हाउ मच विल बी, एंड दैट विल बी द राइट ऑप्शन. आई गेस दिस इज नॉट दैट मच डिफिकल्ट क्वेश्चन, यू ऑल कैन डू इट बाय योर ओन. कमिंग टू द नेक्स्ट वन क्वेश्चन. देखो मैं वीडियो का पेज थोड़ा फास्ट रख रहा हूँ बिकॉज आई हैव टू कवर 5 क्वेश्चन हियर, few question of assertion region and few question of short answer type and long answer type questions. So that's why I am making the video in a little bit pace.
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट सी लेवल इज, ठीक है। अब देखो अगर इसी क्वेश्चन को मैं पूछता सिंपल क्वेश्चन करके आपसे कि व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, तुरंत चिल्ला चिल्ला के आप सब बोलते हैं कि लेट्स द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर विल बी 100 डिग्री सेल्सियस, आई नो दैट, बट इन एग्जामिनेशन जस्ट by changing one word it may create it, sorry, it will create the confusion in a lot of the students mind. That's why also I have added one new word over here like at sea level. देखो इस समय कंफ्यूज नहीं होना है, still if it is a given sea level it will be the same as it is 100 degrees Celsius, but since answer is maximum given in Kelvin, so you have to convert this 100 degrees Celsius into Kelvin, and for that we know that nothing extra we have to do, just only add 273. It does mean 100 plus 273, it will be 373 Kelvin will be over here. This a typing mistake done by me. Okay, coming to the fifth one question, the process of changing of state from solid to a liquid state. ओके जब सॉलिड से लिक्विड स्टेट में सब्सटेंस जाएंगे हमारे तो क्या होगा, वी नो दैट इट्स द प्रोसेस कॉल्ड इज मेल्टिंग, बट एट द सेम टाइम आई मस्ट मेक यू ऑल टू recall one that is one important name of this step as well, and what is that step is called as a melting, or also we can call it as a fusion. Keep in mind sometimes question might be asked कि fusion भी क्या होता है. ओके सो दीज वर द फ्यू इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. और चलो रैंडमली कुछ अब क्वेश्चन देख करते हैं, लाइक द स्टेट ऑफ मैटर विद द लीस्ट काइनेटिक एनर्जी. ओके सो जिसमें सबसे कम काइनेटिक एनर्जी होगा. फॉर दैट अगेन आई विल से दैट ट्राई टू विजुलाइज द इंटर पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड, इंटर पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड, ओके, एंड देन आफ्टर इंटर पार्टिकल्स ऑफ गैसेस. आप खुद देखो कि लाइक द पार्टिकल्स दैट आई हैव ड्रॉन ओवर हियर. अब देखो यहाँ पे ये पार्टिकल देखो आपकी गैस रिप्रेजेंट कर रहे हैं, राइट. दिस पार्टिकल्स रिप्रेजेंट्स सॉलिड एंड दिस रिप्रेजेंट्स लिक्विड. आप खुद देखो इसमें से विच पार्टिकल सीम्स टू बी हैविंग मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी सो दैट दे कैन मूव अपार्ट. देखो सबसे कम काइनेटिक एनर्जी यही दिखेगी आपको, बिकॉज नो स्पेस इज देयर, पार्टिकल्स हैव वेरी लेस काइनेटिक एनर्जी, तो यस सॉलिड विल बी द राइट ऑप्शन. Now the next one, the particles of matter are in constant motion. Yes, correct है. Whether it's a solid, whether it's a liquid or whether it's a gas, particles are constantly moving, and that is a given in the next question कि particles हमारे continuously हमेशा motion करते रहते हैं. So this motion is more in, ये motion सबसे ज़्यादा किस में होता है? Again the same question, very similar to it, because gases have the lot of space there, so gas में ही सबसे ज़्यादा ये motion होगा, right? याद रखना particle की motion से एक term है वी कॉल इट्स अ ब्राउनियन मोशन, तो एक बार आप उसको पढ़ लेना, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, व्हाट इज ब्राउनियन मोशन, दैट्स ऑल्सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी ऑफ अ सब्सटेंस. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. इसमें से कौन सा है कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी है सब्सटेंस की. सो फर्स्ट ऑप्शन इज गिवन कलर, देन आफ्टर मास, एंड देन आफ्टर वॉल्यूम, एंड देन आफ्टर टेम्परेचर. सो व्हाट डू यू थिंक विच विल बी द कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी. So number of times students get confused about this, to find the answer of this question. So for that what I say to you, let us suppose you take only one substance. That substance I am telling you कि चलो एक हम क्या काम करते हैं, एक ग्लास लिया हमने या एक बीकर लिया. In that beaker I have taken a some amount of water. Okay, not let's say water. Let us suppose I have taken the tea only. कुछ है कि हमने टी लिया. ठीक है, आपको प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करता हूँ. सो आई हैव टेकन द एग्जाम्पल ओवर हियर, टी ओवर हियर. सो व्हाट विल हैपन, लेट अस सपोज इफ द टी इज कलर ऑफ ब्राउन इन कलर, ठीक है, whether it's color black is there because black tea is also there, okay, anyway let us suppose so green tea is there. It doesn't exactly, it's neither matters to us what's the color of this tea. जो ये टी हम लोग का पहले भी लिक्विड था, स्टिल इट विल बी लिक्विड नो मैटर वेदर इट्स अ ग्रीन टी वेदर इट्स अ ब्लैक टी. इट डज मीन कलर डज नॉट डिसाइड. देन आफ्टर मास, सो लेट अस सपोज इट्स 100 ग्राम और 100 ml इज़ देयर. ठीक है, अब इसी को मैं अगर 100 ml की जगह 1000 ml ले लूँ, बट स्टिल अभी भी ml में था, अभी भी ml में था, स्टिल इट वॉज अ लिक्विड, अगेन इट्स अ लिक्विड, सो अगेन इट्स नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी. नाउ देन टॉकिंग अबाउट वॉल्यूम, एज द सेम थिंग वॉल्यूम अबाउट कि इसमें भाई हमने छोटा ग्लास लिया है, देन टी इज़ देयर. इफ़ आई एम टेकिंग द सम मोर अमाउंट ऑफ टी इन द बिगर ग्लास, स्टिल द सब्सटेंस विल बी लिक्विड स्टेट. अभी भी तो लिक्विड ही रहेगा, चेंज तो होगा नहीं. इट डज मीन वॉल्यूम कैन नॉट ऑल्सो बी डिसाइडिंग फैक्टर. लास्ट में बच रहा है टेम्परेचर. यस, टेम्परेचर इज द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी. वाई? बिकॉज इफ यू आर गोइंग टू हीट दिस लिक्विड, हीट दिस टी विल कन्वर्ट इन टू द वेपर. ये टी आपका जो है दैट इट विल कन्वर्ट इन टू योर
वेपर, ये आपका वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब वेपर में कन्वर्ट हो गया है, जिनमें कि गैसेस का फॉर्म एक है, इट डज मीन मैटर का स्टेट आपका चेंज हो गया। सो देयरफॉर टेम्परेचर इज योर द कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी ऑफ दिस सब्सटेंस, राइट। सो देखो कुछ ऐसे ही हम लोग के पास इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्वेश्चंस है। आई विल से टू यू कि डाउनलोड करो इस पीडीएफ को एंड जस्ट स्टार्ट सॉल्विंग एज सच क्वेश्चंस। क्वेश्चंस आर अप टू द मार्क, नॉट डिफिकल्ट क्वेश्चन बट नॉट ईजी क्वेश्चन। यू हैव टू थिंक at least for a minute, for a 30 second for the question, then answer this question, otherwise you will do the mistake। ठीक है, चलो एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं हम इस चैप्टर के, मैटर इज मैटर राउंड इज प्योर के। लाइक विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्योर सब्सटेंस, इज गिवन एयर, शुगर सोल्यूशन, सॉल्ट सोल्यूशन एंड गोल्ड। अब देखो डायरेक्टली तुरंत आप आंसर यहाँ पे बोल दोगे गोल्ड को, यस आंसर सही भी यहाँ पे गोल्ड है, बट इन केस एट द प्लेस ऑफ गोल्ड इट इज़, इफ इट इज़ रिटेन गोल्ड ज्वेलरी, ओके, अगर गोल्ड ज्वेलरी यहाँ लिखा होता तो कीप इन माइंड इन केस, तब इन दैट केस दिस आंसर वुड हैव बीन द रॉन्ग आंसर। प्लीज ensure this thing, number of times I am telling, because we know that if gold jewelry is there, it is an alloy, it's not a, and we know that alloy is a mixture, that is a homogeneous mixture, since here it's not given, तो यहाँ के लिए सही है गोल्ड ऑप्शन होगा, बट अगर ऐसा रहता तो याद रखना इस चीज़ के लिए। नेक्स्ट वन, a solution that cannot dissolve any more of the solute, we know that we call that the saturated solution। एक saturated solution एक ऐसा solution जिसमें no more of solute can be is dissolved, so that solution will be called as your saturated solution। do comment section में आप मुझे बताओ how can we make this saturated solution again unsaturated। okay, so these are the few of the important questions, students. Please solve these questions, it will not take much of your time along with your preparation as well। and again I am telling you, it's not like that ki only these are the question will be asked in examination, it is just only for your help। okay, now let us discuss some of the assertion region question and short answer type and long answer type questions। So students, now let us discuss some of the frequently asked questions। this PDF includes short answer type question as well as long answer type questions। So let us see, why do gases have neither fixed shape nor a fixed volume? We all know that why do gases do not have fixed shape, because the force of attraction between the interparticles or intermolecules जो भी आप कहते हो, the force of attraction is negligible force of attraction between the interparticles of gases। okay, that's why they do not have fixed shape, and yes the force of attraction में इतना कम है, that's why they do not have fixed volume also, because when we are transferring gas from one container to another, the molecule escapes, so that's why volume is also not fixed for the gases। more, so in any as such more explanation can you write, I'm not saying that only this much line you will have to write, right। the next question is that convert the following temperatures into Celsius scale। the same we will have done in that MCQ question, so need not to be discussed over here। this one question, explain why naphthalene balls kept is in stored clothes in our home disappear over a period of time। I know that many of you know the answer of this question and directly will say that sir it will undergo sublimation। yes, it's a correct answer, but keep in mind depending upon the marks of question आप इसके आंसर लिखिएगा। if it is a 1 marks question 2 marks question तो ठीक है, एक दो लाइन लिख दिए चलेगा, but in case 3 marks question 2 marks question, so please little bit explain it। okay, like naphthalene is a substance which undergoes sublimation, it will directly convert from solid to gaseous state, so this is how you make the explanation clear, otherwise your answer will be treated as a incomplete। next one, what is the name of the process due to which dry ice changes into carbon dioxide gas? again see, dry ice is solid carbon dioxide इसको कहते हैं, so I have just right now said that solid carbon dioxide, so I am writing over here solid and it is being converted into gas। तो सॉलिड डायरेक्टली हम लोग का कन्वर्ट हो रहा है गैस में। अगेन व्हाट डू वी कॉल दिस प्रोसेस, सब्लिमेशन जो भी लिखा है, सो सब्लिमेशन विल बी द राइट ऑप्शन। अब देखो यहाँ पे पूछा है राइट द नेम ऑफ द प्रोसेस, सो वन वर्ड इज एनफ ओवर हियर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट एक्सप्लेन ब्रीफली interconversion of states of matter with the help of diagram। you all very well know that we have done, have just made this diagram, like gases is there, then after solid is over, solid is there, and then after liquid is over there। number of times we all have made this diagram, gas, liquid is there, and then after solid। okay, so number of times
अब यहाँ पे कौन से स्टेप कन्वर्जन हो रहा है, गैस को क्या करेंगे, यहाँ पे लिक्विड सॉलिड से कन्वर्ट हो रहा है, सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, तो व्हाट डू वी कॉल दैट। तो इस तरीके से डायग्राम बना के आप यहाँ पे एक्सप्लेन करना। लास्ट एक क्वेश्चन देख लेते हैं, व्हाट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर एट 25 डिग्री सेल्सियस। वी नो दैट व्हाट विल हैपन एट द 25 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस दोनों स्टेट में एग्जिस्ट कर सकता है आपका। ओके, why ice at 273 Kelvin more effective in cooling? Just one word I am giving you hint over here because everyone know the answer of this question. It's the question is indicating to asking you the term means utilizing the concept latent heat of fusion, that is a latent heat of fusion, right? ये कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करके इसमें आंसर लिखना है। ओके, सो आइस हम लोग का मोर इफेक्टिव कूलिंग क्यों होता है एट 273 केल्विन देन द वाटर एट द सेम टेम्परेचर। सो आप कैन यू ऑल कैन सी द ऑल द एज सच, ये सभी क्वेश्चन देखना यहाँ पे इंपॉर्टेंट बेटा आपके डिस्कस इस क्वेश्चन को, सभी क्वेश्चन को आप सॉल्व करो। इन केस यू आर फेसिंग डिफिकल्टी विद एनी ऑफ द प्रॉब्लम यू कैन डायरेक्टली रीच आउट टू मी। ओके, नाउ लेट अस सी one or two more question as such of assertion region also. So students, see here are the some of the assertion region question that I have selected. Since I have selected, so I am not saying that कि सिर्फ यही questions आएंगे, number of times I am saying that as such questions more questions you have to practice. चलो देखते हैं काक MCQ questions, sorry assertion region question यहाँ पे भी, like yes this question number of times this question have been asked in the previous years. So let us see what will be the answer of this question. Ice floats on water. Number of times, not number of times of course, you all have seen this experiment that activity sorry I have done in the class कि like ice floats on the water and we have seen in our home as well, right? कि ice हम लोग का water में float करता है। तो yes, assertion is correct. This assertion statement is your correct statement. Okay, now why ice floats on the water is that कि ठीक है हमें पता है बेटा ice still it's solid in nature होता है हम लोग का, solid की डेंसिटी हमारी ज़्यादा होती है दैन comparative to liquid, तो इस solid को तो नीचे सिंक कर जाना चाहिए, बट still ice floats because ice का जो स्ट्रक्चर होता है वो केज लाइक स्ट्रक्चर होता है। इन दैट केज लाइक स्ट्रक्चर gas molecules are trapped, air molecules are trapped which makes its density lighter than the liquid, liquid के comparatively उसकी density को वो कम कर देते हैं, that's why ice floats। तो आप चेक करो क्या यही रीज़न आपको यहाँ पे दिया है रीज़न स्टेटमेंट में, ऑफ कोर्स नॉट। क्या दिया है यहाँ पे, लिक्विड्स हैव लोअर डेंसिटी दैन सॉलिड। यस, रीज़न करेक्ट तो है कि अभी मैंने आपको बताया कि लिक्विड की डेंसिटी कम है दैन कंपेरेटिव टू सॉलिड, बट यहाँ पे दिया क्या हम लोग का, इस असर्शन को करेक्ट एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। इट डज मीन आपका कौन सा इसमें ऑप्शन होना चाहिए, आप ऑप्शन चेक कर लो यहाँ पे, लाइक बोथ द असर्शन एंड रीज़न आर ट्रू बट नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो देखो यहाँ पे कुछ ऐसे क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे डिस्कस कर रखे हैं, सॉरी यहाँ पे दिए हैं, अब प्रैक्टिस करना है सच क्वेश्चंस को। सून आई विल शेयर यू द केस बेस्ड क्वेश्चंस एज वेल। ओके, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। इन केस ऑफ एनी डिफिकल्टीज इन योर सब्जेक्ट केमिस्ट्री यू ऑल कैन रीच आउट टू मी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।